निकेतन में पढ़कर बहुत खुश हूँ। हमारे निकेतन में पंचपदी शिक्षा व्यवस्था के आधार पर शिक्षा दी जाती है, जो अब नई शिक्षा नीति के तहत लागू होने जा रही है। हमारे निकेतन में 42 आचार्य, 2 कार्यालय सहायक और 10 चौथी वर्ग के कर्मचारी हैं, जो लगन और उत्साह से अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। हमारे विद्यालय के 14 विद्यार्थी स्थान प्राप्त करके विद्यालय का गौरव उज्जवल किया है। Chance to deliver a speech in this beautiful meeting. Very few students get such a chance, so I think myself to be very happy. प्रथम गुरुत्वपूर्ण परीक्षायां अवतीर्ण भविष्यामि इति क्षणे अहं प्रथमं सर्वेषां प्रति आशीर्वादं लब्धुम् इच्छामि। द्वितीय क्षणे निकेतनस्य सर्वेषां आचार्यान् प्रति अहं कृतज्ञ भवामि, कारणम् अद्य सर्वेषां सम्मुखे द्वे वाक्यं वक्तुं सम्भवम्। आचार्याः कथनं चेष्टा तथा मार्गदर्शनम्। दशम श्रेण्यां छात्रः भवितुम् इति कारणात् मम सूक्ष्म ज्ञानेन निकेतनस्य तथा सामाजिक वर्तमानस्य व्यवस्थायां प्रति बहवः वक्तुम् अहम् असमर्थः। पुनर्वार सर्वेषां प्रति मम नमस्कारं प्रदीयते। आगन्तुकदिनानि मम जीवनस्य उज्ज्वलं भवितुम् आशीर्वादं तथा अभिवादन आशां कर्ता मम भाषणस्य समाप्तं करोमि। धन्यवादः। कविताটির শিরোনাম নিয়, কবি চন্দ্রকুমার আগরওয়াল। মুকুতা মণিতে পাহিত জিলিকে ফটিক পানীত ধোৱা নিশাৰ তৰাইটি হৰিহে আছে সৰগত টোপনি যোৱা। নিজৰ আকাশৰ নিচুক কথাতে হিয়াত থৈছে সাঁচি। কোন কাহানিৰ সপোন দেখিছে, কোনে হাঁহিছিল নাচি। ফুলনিত কোনে নিশা নাচিছিল, ছিগি লৈ গ'ল মণি। পুৱাৰ শিঙলি বেলিটি লৈ চাই এটুপি চকুৰ পানী। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আগষ্ট 2024 তাৰিখত হাৰিয়ানাত হৈ যোৱা কাই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা চেম্পিয়নশ্বিপত ভাগ লৈছিলোঁ। এই খেলখনত কমেও 14খন ৰাজ্য ভাগ লৈছিল। তাৰে মাজত ময়ো অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মোক ভাগ ল'বলৈ বাছনি কৰিছিল আৰু মই খেলিব যায় বহুত আনন্দিত হৈছিলোঁ। লগতে মোৰ আচাৰ্যসকলেও মোক বহুত উৎসাহ যোগাইছিল।
দুই পাৰত গালো দৃপ্ত উৎসাহত আপোনাৰ বিজয়ৰ গান ভৰি দিলোঁ অসমৰ সেউজীয়া দুবৰি বনত সেইদিনা যিদিনা অসম ৰাত অসমৰ সিংহ আসনত ধ্বজ অৱতৰণ কৰি তেখেতে আমাৰ ৩৫তম বাৰ্ষিক উৎসৱ সামৰণি কৰা বুলি ঘোষণা কৰিলে।